Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, one more. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Srila Prabhupada ki, Jivanath Rathyatra ki. Okay. Thank you all for being here. Now, is there anybody here who doesn't like chanting Hare Krishna? Yes, please. आप सभी यहाँ पे आए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यहाँ पे ऐसा है क्या जो हरे कृष्ण कीर्तन पसंद नहीं करता है? Anybody respond? Okay, on a scale of 1 to 10, 10 meaning you love Kirtan, what are you? Is that? तो पहले स्तर का आपको 10 में से 10 मिल गए कि आप कीर्तन को पसंद करते हैं। 1 से 10 में मतलब आप कहाँ पे कीर्तन में पसंद करते हैं? 10. Do we have 10s? Are we all 10s? So we all love Kirtan. Boy, are we going to have fun today. तो हम सभी कीर्तन पसंद करते हैं तो आज हम बहुत ही आनंद हमको मिलने वाला है. Because today is all about glorifying the Lord
through Harinam Sankirtan Kirtan. क्योंकि आज का जो दिन है वो कीर्तन के माध्यम से भगवान की महिमा गाने का ही दिन है। Haribo. So it's very special because Lord Jivanath is so merciful that he not only gives his darshan in the temple, but he allows us to take him out to the streets. क्योंकि ये बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान जगन्नाथ न केवल मंदिर में दर्शन देते हैं बल्कि अपने को बाहर ले जाने की भी अनुमति देते हैं ताकि लोग उनका गलियों में भी दर्शन कर पाएं। Prabhupada introduced this Rathyatra and he told the devotees about it before there was one anywhere outside of India. प्रभुपाद जी जगन्नाथ को देश में लेकर आए, उन्होंने अपने शिष्यों को भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया। उसके पहले भारत के बाहर कोई भी नहीं जानता। One. Okay, yeah, that's fine. Okay, cool. And the devotees, not quite understanding what it was really about, one day they had little tiny Radha Krishna deities. They took them out for a parade. तो भक्त लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था कि जगन्नाथ के बारे में क्या चर्चा है। तो एक दिन थोड़ी राधा कृष्ण के विग्रह थे, भक्त लोगों को बाहर ले गए ब्रेक के लिए, घुमाने के लिए। And Prabhupada sort of nicely told them that we don't take Radha Krishna deities out like that. प्रभुपाद ने अच्छे से उनको बताया कि देखो हम राधा कृष्ण के विग्रहों को इस तरह बाहर नहीं ले जाते घुमाने के लिए। So I'll do the verse. Unfortunately, when I tend to give classes, I almost forget to do the verse because I start telling stories, and next thing you know, it's like, time to go, and I forgot the verse. So let me do the verse. Okay. It's a problem that I have. Okay. Are there any Bengalis here? Bengali भक्त हैं यहाँ पे। Can one Bengali please do this verse because it's in Bengali, right? तो एक बंगाली भक्त श्लोक को पढ़ सकते हैं। We have to have an official Bengali do it. This one? This one? It's verse 1, yes. That's Sanskrit. Oh, that's Sanskrit too, isn't it? Yeah. Well, let's do it. Oh, we don't have any. I wanted to get a Bengali to do it. Oh, well. Okay, who's a Sanskrit specialist? Okay, let's let this Prabhu here. There's the microphone coming to you. Same verse with India. Shri Gundicha Mandiratmanam Vande Shri Gundicha Mandiratma Vrinde Sammarnam Akshataram Sagora Sammardya Utshalata Kasagora Vachitta Vachitam Mujjavalam Cha Sachitta Vachittalam Valam Cha Shove Paishwa Sho Payanikam Chakara Now I just want one Prabhu to respond. Just one. Not you. Somebody else. This Prabhu here. Yeah. Mandiram Atma Vrindaihi Shri Gundicha Mandiram Atma Vrinde Sammarjayan Shalanataha Sagauraha Sammarjayan Shalanataha Sagauraha Swachittavat Shitalam Ujjalam Cha Swachittavat Shitalam Ujjalam Cha Upaveshau Paikam Chakara Krishna Upaveshau Paikam Chakara. One Mataji. Shri Gundicha Mandiram Atma Vrinde Sammarjayan Shalanataha Sagauraha Swachitta Vachitalam Ujjalam Cha Krishna Upaveshau Paikam Chakara. Okay. We can do the word for words. I can do this.
Sri Gundicha, known as Gundicha, Mandiram, the temple, Atma Vrindai, with his associates, Samarjayan, washing, Shalanata, by cleansing, Saha, that, Gura, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Svachittavat, like his own heart, Shitalam, cool and calm, Ujvalam, bright and clean, Cha, and Krishna, of Lord Sri Krishna, Upavesha, for the sitting, Apayikam, befitting, Chakara, made. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the Gundicha temple with his devotees and associates. In this way, he made it as cool and bright as his own heart. And thus he made the temple a befitting place for Lord Sri Krishna to sit. अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सका. So, as we know, today is Jivanath Rathyatra. जैसा कि हम जानते हैं आज जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है. Now the most famous Jagannatha resides in Jagannath Puri. सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी में विराजते हैं. Now this doesn't affect most of you, लेकिन उससे आप लोग सभी लोग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. but devotees of Lord Jagannath who happen to be wearing white skin are not allowed in to see Lord Jagannath. लेकिन भगवान जगन्नाथ के वे भक्त जो सफेद चमड़ी वाले यानी जो अंग्रेज हैं उनको अनुमति नहीं है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन की. Well, back in 1972, Srila Prabhupada was invited to a book fair in Jagannath Puri. 1972 में श्रील प्रभुपाद ने मुझे बुलाया था एक पुस्तक मेले में जगन्नाथपुरी. And one of his female disciples was not ready to accept that she was not allowed to see the Lord of the universe, Sri Jagannath Swami. और श्री प्रभुपाद की एक माताजी भक्त थी वो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि हमें भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ उनका दर्शन नहीं मिलेगा पुरी में. So she decided to go see Jagannath. उन्होंने निर्णय किया कि जगन्नाथ के दर्शन करने ही है. But of course, just walking in would never work, so she thought, I'll wear a disguise. तो लेकिन ऐसे जाएंगे तो सभी रोक देंगे वहाँ. तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा रूप बदल के दूसरे देश में जाऊंगी. So she put a great big chadar over her, तो एक बड़ी चादर अपने सिर पे डाल दी. bent over as if she was a little old lady. ऐसा झुक गई ताकि मैं थोड़ी बूढ़ी हूँ ऐसा दिखे. She had a cane, डंडी हाथ में छड़ी पकड़ ली. and she walked in like that. इस तरह चल रही है बुढ़िया की तरह. Well, she didn't get very far. लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाता. The chowkidars grabbed her cane, चौकीदार ने छड़ी पकड़ ली, ripped off her chadar, चादर हटा दी and started beating her with the cane. और उसी छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया. So naturally, she got on the run. तो स्वाभाविक रूप से वो डर गई और फिर भागने लगी. While the chowkidars are chasing her, hitting her with his cane. और चौकीदार भी पीछे पीछे भाग रहा है और उससे प्रहार कर रहा है डंडी से. Now this was very, very upsetting for a young 22-year-old woman to be trying to see the Lord of the universe and to be attacked for her desires to have darshan. तो ये बहुत ही एक दुखी करने वाला था एक ऐसे भक्त के लिए, 22 साल की युवती के लिए जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाह रही है और उसको नहीं करने दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है.
So in a very upset mood, she went to see Srila Prabhupada. बहुत निराश मनोभाव के साथ श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए वो गई। Told Srila Prabhupada what just happened. श्रील प्रभुपाद को बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। And Srila Prabhupada became very angry. श्रील प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए। But he didn't say anything, he just expressed it with his eyes. लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपनी आंखों से वो क्रोध व्यक्त हो रहा था। So the next day, Srila Prabhupada and all his disciples were at this book fair. तो अगले दिन श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य सभी उस पुस्तक मेले में गए। Now the fair was actually with all kinds of sadhus who had written these wonderful, to them, spiritual books. और ये जो मेला था ऐसे तथाकथित साधुओं का सा जिन्होंने बहुत अद्भुत पुस्तकें जो उनको अद्भुत लगती थी ऐसी लिख रखी थी। Now, because Srila Prabhupada was with Western disciples, and these were the only Western devotees in this book fair, everyone gathered around Srila Prabhupada. और चूंकि श्रील प्रभुपाद विदेशी भक्तों के साथ वहां पे थे और केवल विदेशी भक्त विदेशी लोग वही थे जो विदेशी भक्त थे, इसके अलावा कोई नहीं था, तो सारे लोग विदेशी भक्तों के चारों ओर घेर के खड़े हो गए। Now, one of these sadhus who had written a book handed the book to Srila Prabhupada. जो वहाँ साधु थे जिन्होंने किताबें लिखी थी, एक ने अपनी किताब श्रील प्रभुपाद को दी। Prabhupada took the book, touched it to his head, and handed it back to the sadhu saying, I have not read this book. श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक ली सिर पे और साधु को वापस दे दी, बोले मैंने ये पुस्तक पढ़ी नहीं। So Srila Prabhupada then took the opportunity to express the anger and pain he had felt the night before upon hearing the story about one of his disciples. श्रील प्रभुपाद को ये अवसर मिला कि पिछली रात को जो उन्हें दर्द हुआ था, जो क्रोध था, अपनी शिक्षा की इस तरह पिटाई होने पे उन्हें व्यक्त करने का अवसर मिला। He raised his voice so that all those around could hear. श्रील प्रभुपाद ने अपनी आवाज उठाई ताकि वहां पे जितने उपस्थित लोग हैं वो सब सुने। Especially the organizers of this book fair, who were all part of the Jivanath temple. विशेष रूप से उस पुस्तक मेले का आयोजक सुने जो सभी जगन्नाथ मंदिर समिति के सदस्य थे। He said, Jivanath is Jivanath. तो जगन्नाथ जगन्नाथ हैं। He is not Orissanath. उड़ीसा नाथ नहीं है। He is not Purinath. पूरी नाथ भी नहीं है। He is here for all his devotees from all around the world. वो यहाँ पे अपने विश्व के सारे भक्तों के लिए विराज रहे हैं। Who are you to say that his devotees cannot come and take darshan? तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि उनके भक्त आके दर्शन नहीं ले सकते हैं? They must be allowed to take darshan. उनको अनुमति होनी ही चाहिए दर्शन करने की। If you do not let them take darshan, यदि आप उनको मना करेंगे दर्शन करने से, Lord Jivanath will pack his bags and come live with us. जगन्नाथ अपना बैग पैक करके हमारे साथ रहने चले जाएंगे। हरि बोल। Hari Bol. And from that time on, Srila Prabhupada never took darshan of Lord Jivanath just to stand up for his disciples. और उस दिन से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के प्रति सहानुभूति और समर्थन देते हुए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के फिर दर्शन नहीं किए। So Lord Jivanath, we take him to the streets. तो भगवान जगन्नाथ को हम सड़कों पे ले जाते हैं। Now I'm going to imagine or assume, I should say, that everybody here, except for, well, these guys and me, probably never heard of Lord Jivanath prior to becoming a devotee. Does that make sense? You all have heard of Lord Jivanath, I haven't. I'll simplify it. तो हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पे जितने भक्त हैं उनमें से जगन्नाथ के बारे में भक्त बनने से पहले किसी ने सुना नहीं हो। So when Srila Prabhupada, who absolutely loved Rathyatra, तो श्रील प्रभुपाद जो रथ यात्रा को बहुत ही पसंद करते थे,
He used to perform it as a small boy with his own little deities in a little cart and all his friends, and they'd have a rath. जब वो छोटे थे तब उनका खुद का रथ था, विग्रह थे, और वो रथ यात्रा किया करते थे अपने मित्रों के साथ। So it was in his heart. He loved Rathyatra. तो हृदय में उनके थे जगन्नाथ, वो रथ यात्रा को बहुत पसंद करते थे। So one day in San Francisco, this is very, very early on, one of his disciples, तो सैन फ्रांसिस्को ये आंदोलन के शुरू की बात है, श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या, she had gone to a Indian emporium, and that's a store that sells all kinds of Indian things. तो वो एक भारतीय बाजार में गई थी, वहाँ पे सारी भारतीय वस्तुएं मिलती हैं अमेरिका में। Because in 1960 in America, India, yoga, vegetarianism was just starting, and it was kind of cool. तो 1960 की बात, ये दशक की बात है, उस समय भारतीय योगा और ये जो सब शब्द थे बहुत ही बजिंग वर्ड्स थे, और सब लोग को ये बहुत पसंद आ रहे थे। So this Mataji went into this store, and in the discount bin, which is a bin where they just put all the stuff they're trying to get rid of really cheap. It's called a discount bin. It's a big box with all kinds of just things thrown in. तो वो एक उस भारतीय बाजार में गई, वहाँ स्टॉल पे गई जहाँ पे डिस्काउंट रेट पे बहुत सारी वस्तुएं मिल रही, सस्ते में चीजें को बेचा जा रहा था। So this young disciple Srila Prabhupada looked in the bin and saw these really cute little dolls. तो उनकी शिष्या ने वहीं पे देखा एक टोकरी में एक छोटी सी गुड़िया, They were so different looking. They had like really big eyes. बहुत अलग ही दिख रही थी वो गुड़िया, और बड़ी बड़ी आंखें, Like nothing she'd ever seen before. इस तरह कुछ दिखा ही नहीं था माता जी ने पहले। And being curious and wanting this doll, she put it in her pocket. तो उसमें वो बहुत जिज्ञासा हुई और बोले ये तो मुझे चाहिए, उन्होंने उठा के पॉकेट में डाल दिया। I mean, you gotta remember, back in the late 60s, devotees didn't have a whole lot of money. आप सोचिए उस दशक में हमें लोग भक्तों में इतना पैसा भी नहीं था ना। So she did what in America we call a 5-finger discount. तो उन्होंने वो किया जिसे अमेरिका में हम बोलते हैं 5 उंगलियों के साथ छूट, इसे उठा के हरे कृष्ण। Does that make sense? 5-finger discount. Thank you. I'll take that discount. So she brought this little doll back to Srila Prabhupada. तो इस डॉल को बुड्ढे को लेके श्रील प्रभुपाद के पास वो आती हैं। When she showed Srila Prabhupada got down on the ground and paid his obeisances. जब श्रील प्रभुपाद ने उनको देखा तो प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। And she told him where she got the doll. और माता जी ने बताया कि मुझे ये कहाँ से मिला है गुड्डा। And Prabhupada said, how much did it cost? अब प्रभुपाद जी ने कहा कितने का मिला? And she dipped her head a bit. और थोड़ा उन्होंने अपना सिर झुका लिया माता जी ने। I don't know, Srila Prabhupada, I just put it in my pocket. प्रभुपाद जी मैं इस पे कुछ पेमेंट नहीं किया, मैं जेब में ही लेके आ गई। Prabhupada was so tolerant. प्रभुपाद बहुत सहनशील थे। He says, do they have any more, but a little bit different? प्रभुपाद जी ने कहा उनके पास और भी ऐसे हैं क्या, थोड़े लेकिन अलग हैं? She says, oh yes, they had a little yellow one and a white one too. हाँ, वहाँ पे एक पीले वाले भी हैं ऐसे गुड़िया और एक व्हाइट वाले गुड्डे भी हैं। And Prabhupada took his purse and took some money out of it and says, go back and buy the other two. थोड़ा पैसा प्रभुपाद निकाला और बोला कि जाओ दो और भी खरीद के लेके आना। And when he had Jivanath, Baladev, and Subhadra, he said they have come to San Francisco. और फिर जब तीनों वो जगन्नाथ थे और बलदेव और सुभद्रा जब तीनों आ गए तब प्रभुपाद जी ने कहा अब ये सैन फ्रांसिस्को में आधार चुके हैं। He asked if anybody knew how to carve. Any of these prospective disciples, did you know how? Anybody know how to carve? तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि कोई भी ऐसे शिष्य है जो मूर्ति बना सकता है, बड़ी मूर्ति। And Bhakti Sam, who later became Shyam Sundar Das, he says, oh yes, Srila Prabhupada, I know how to carve. तो भक्त सैम जो बाद में श्याम सुंदर को बनाने का प्रभुपाद जी मैं जानता हूँ, मैं विग्रह बना सकता हूँ। He said, could you make a carving like this big of these little dolls?
प्रभुपाद ने पूछा कि आप इतना बड़ा बना पाएंगे विग्रह इन छोटे फूलों से? And Shyam Sundar, Bhakti Sam said, yes, Srila Prabhupada, I think I could do that. और श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, यस प्रभुपाद, मैं बना सकता हूँ। He got the ingredients, the big giant piece of wood, तो उसके लिए जो सामान चाहिए था, बड़ा लकड़ी का, and started carving the deities in his apartment. और अपने अपार्टमेंट में उनको बनाना शुरू किया। And at that time, he was not initiated, उस समय दीक्षा नहीं हुई थी उनकी, but he loved Srila Prabhupada. वे श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते थे। And Prabhupada was staying in San Francisco for as long as it took for these deities to be made. और श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में रुके थे, बहुत लंबे समय तक रुके थे ताकि ये विग्रह बनके तैयार हो। So Shyam Sundar was taking his time because Prabhupada was staying in San Francisco. तो श्याम सुंदर प्रभु भी समय ले रहे थे और श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में रहते रहे। And Prabhupada kept saying, how are we doing? Oh, going fine, Srila Prabhupada, coming right along. प्रभुपाद जी मुझसे कैसे चल रहा है? प्रभुपाद जी एकदम बढ़िया चल रहा है। So one day Prabhupada actually went to his apartment. प्रभुपाद जी एक दिन अपार्टमेंट में चले गए उनके। Walks in, he has his little walking stick, his cane with him. और अपनी छड़ी थी प्रभुपाद जी अपनी उसके साथ हो गए। Right in the living room, there was Jivanath, Baladev, and Subhadra, almost finished. तो जो रहने का कमरा था, वहीं पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वहाँ विग्रह थे, लगभग बन ही गए थे। And while looking at Jagannath, और जगन्नाथ की ओर देखते हुए, and then Subhadra, और सुभद्रा की ओर, and then Balaram, फिर बलराम की ओर, Prabhupada noticed on top of Balaram's head प्रभुपाद ने देखा बलराम जी के सिर पे was a pack of cigarettes. सिगरेट का पैकेट है। Bhakti Sam hadn't given up the cigarettes yet. डॉक्टर सैम ने अभी तक सिगरेट पीना छोड़ा नहीं था। And in one swoop, Prabhupada with his cane knocked the cigarettes off of Balaram's head and away from the deities. और प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से ऐसे घुमाया, बलराम जी के सिर से सिगरेट का पैकेट दूर फेंक दिया। And said to Shyam Sundar, I think you should stop doing these. और श्याम सुंदर बोला, मैं सोचता हूँ कि अब आपको सिगरेट पीनी बंद कर देनी चाहिए। Shyam Sundar stopped this after he finished the pack. श्याम सुंदर प्रभु बंद कर दिए, वो पैकेट खत्म करने के बाद बंद कर दिए। And also in the apartment was a really nice dog running around the deities. A dog, yeah, a और dog. अपार्टमेंट में एक कुत्ता भी था, बहुत सुंदर, इधर उधर विग्रहों के चारों ओर परिक्रमा घूम रहा था। Prabhupada actually liked the dog, प्रभुपाद वास्तव में उस कुत्ते को पसंद किया and the dog liked him. और कुत्ते ने प्रभुपाद को, When they used to travel in this unbelievably old, horrible van, the dog would sit next to Srila Prabhupada. तो जब वो इस एक बहुत ही वैन में जाते थे, बहुत पुरानी वैन में जब प्रभुपाद जाते थे, तो कुत्ता प्रभुपाद जी के पास में बैठ जाता था। Because wherever the devotees went, the dog went. क्योंकि जहाँ जहाँ भक्त गए, वो कुत्ता भी पीछे पीछे। So they were the first deities ever in America. तो अमेरिका में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की ये पहले विग्रह थे। Now, Srila Prabhupada was always wanting to have Rathyatra. श्रील प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि रथ यात्रा का आयोजन हो। So one day, while looking out his window in San Francisco, he noticed a big flatbed truck come by, park outside. तो एक बार सैन फ्रांसिस्को Flatbed में truck, big flat. अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे, प्रभुपाद देखेंगे एक फ्लैट बेड ट्रक, मतलब जिसका पीछे से एकदम प्लेन उसके ऊपर है, खुला है ट्रक, वो ट्रक जा रहा है। And he said to Shyam Sundar, can we get something like that? Can we rent or buy or get? How? You know, can we do it? तो प्रभुपाद जी ने कहा, श्याम सुंदर से कैसा फ्लैट बेड ट्रक, क्या हम इसको किराए पे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं? And he said, yeah, I actually have a friend who has one. तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभुपाद जी, मेरे एक मित्र हैं, उनके पास ऐसा है भी। And Prabhupada then sat down and drew up what he wanted the cart to look like for Jagannath. तो प्रभुपाद जी से बैठे और उन्होंने एक ऐसा खासा, एक ऐसा निर्देश दिए कि मैं कैसा चाहता हूँ ये रथ होना चाहिए जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए। So in 1968, the first Rathyatra outside of India
was in San Francisco. भी वो 1968 में भारत के बाहर पहली रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को में। Now I'd like to tell you about the first Rathyatra in New York City. अब मैं आपको बताना चाहूँगा पहली रथ यात्रा न्यूयॉर्क शहर में। Well, this one's kind of special because why? Srila Prabhupada started the movement in New York City. ये बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने क्यों न्यूयॉर्क शहर से ही अपने आंदोलन की शुरुआत की। And he always had a strong desire to have the Rathyatra in the place where the whole movement started, New York City. प्रभुपाद जी की बहुत हृदय से इच्छा थी कि रथ यात्रा का आयोजन उस शहर में जरूर हो जहाँ से पूर्ण आंदोलन की शुरुआत हुई, न्यूयॉर्क से। So in 1976, Srila Prabhupada said to one of his leading, intelligent, organized disciples, I want to have the Rathyatra down 5th Avenue in New York City. 1976. तो 1976 में श्रील प्रभुपाद ने अपने एक बहुत ही होशियार, बुद्धिमान, उत्साही शिष्य से कहा कि मैं न्यूयॉर्क शहर में डाउन स्ट्रीट में ही रथ यात्रा का आयोजन करना चाहता हूँ। The reason I can remember it so clearly because the day after Rathyatra, I got initiated. क्यों मैं इसको अच्छे से इस घटना को याद रखता हूँ? इसका कारण ये है कि रथ यात्रा के अगले दिन ही मेरी दीक्षा भी हुई थी। But that story is for another day. लेकिन ये कहानी अगले दिन की है। I don't want to take it away from Jivanath. जगन्नाथ से हम दूर नहीं जाना चाहते हैं अभी। So the devotee, when asked to get this Rathyatra going on 5th Avenue, he already knew that in New York City there was a bylaw, a law against parades down 5th Avenue. तो जब ये भक्त को पता चला कि ये रथ यात्रा का इस तरह इच्छा व्यक्त की गई प्रभुपाद ने, तो वो साथ में ये जानते थे कि 5th एवेन्यू जहाँ पे रथ यात्रा के प्रभुपाद जी ने कहा है वहाँ पे ये जुलूस निकालना अनुमति नहीं है। What's so special about 5th Avenue? Well, it's where all the money is, all the banks, the most expensive stores. It is the most important street in the whole world. तो क्यों 5th एवेन्यू में ऐसा किया था? क्योंकि इस गली पे, इस सड़क में सबसे बड़े-बड़े बैंक हैं, बहुत पैसा में है, बड़े-बड़े एक्सपेंसिव स्टोर हैं। और रोज बता रहे हैं कि सबसे महंगी गली जो है विश्व में वो सड़क वो 5th एवेन्यू ही है। But like I said, there's a law against parades on 5th Avenue. लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस पे जुलूस निकालने का प्रतिबंध है उस सड़क पे। So when Srila Prabhupada asked his disciple to go get permission inside, he was going, oh, what a waste of time. But Prabhupada's telling me to do it. I guess I'll go do it. तो शिष्य ने जब प्रभुपाद ने शिष्य को कहा कि जाओ तो परमिशन लेकर आओ, तो हमने सोचा अरे समय नष्ट करना है, लेकिन फिर बोले नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है तो अपन चलते हैं, प्रयास करते हैं। Now you've all heard the expression red tape. You know what red tape means? Red tape. Red tape. आपने एक शब्द सुना है रेड टेप का अर्थ क्या होता है? In other words, if I want to speak to him, I have to speak to him, to speak to him, to speak to him, to speak to him, to speak to him. I can't just speak to him. It's called red tape. It's an expression. It means you have to go through dancing, talking, moving through and get to the papers. Finally, you get to the guy you really want to speak to. तो रेड टेप का अर्थ है अपने भारत में सरकारी काम होते हैं कि कोई काम करना है तो पहले इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके उसके बाद फिर जाके पहुंचेंगे जिससे मिलना है। तो रेड टेप का मतलब यही। So this devotee, he goes to the office of the bylaws and administration of streets, whatever. भक्त परमिशन लेने के लिए गए इस कार्यालय में, फिर उस कार्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फंस गए। The first lady says, okay, can I help you? पहली महिला मिली, हाँ मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। And the devotee says, I need to fill out some papers. Okay, for what? तो भक्त ने कहा कुछ पेपर मुझे देने हैं। उन्हें किसके लिए देने हैं? Well, we want to have a parade down 5th Avenue. तो हमें जुलूस निकालना है 5th एवेन्यू।
You know there's a law against that, right? आप जानते हैं ना वहाँ ये सब करना मना है. He's doing good. And the devotee says, I know there's a law against it, but my spiritual master has asked me to get this permit. तो भक्त ने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि मना है, लेकिन मेरे गुरुदेव की इच्छा है, इसलिए परमिशन लेने के लिए आया हूँ. And again. फिर से. Okay, well here you go. Here's the paperwork. Just fill it out. A133, put part 3 for this. Then you do down the page, turn the page, and sign over here. उन्होंने कहा ठीक है ये पेपर हैं, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये सब पॉइंट भर के साइन कीजिए नीचे. The devotee does it. भक्त ने वैसे ही किया. She says, okay, thank you. Just leave that with me. ठीक है आप इनको छोड़ के आप चले जाइए मेरे पास. He says, no, I have to file this. I need to do this today. नहीं मुझे तो ये आज ही सबमिट करने हैं. Go down the hall, 3 doors, and there's an office in there, and you can just put it on the desk. Go down the hallway. There's an office 3 doors down, and you just put it on that gentleman's desk. तो आप नीचे जाइए, वहाँ पे 3 दरवाजे छोड़ के एक कमरा है, वहाँ पे जाके इसको सबमिट कीजिए. Well, that gentleman was there. He looked at the papers, and of course he goes, ha 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 ha. तो वहाँ पे एक जेंटलमैन बैठे थे, उनको पेपर मिले तो वो भी हा हा हा. You know, there's a law against parades on Fifth Avenue, right? वो बोले अरे आप जानते नहीं ये उस पे जुलूस निकालना मना है, उसके विरुद्ध काम. Well, I don't want to waste your time. And the guy goes, devotee says, please, just who do I need to see? And he goes, well, the actual head of the office is another 3 doors down and take a right. And if you can give it to him, maybe, but probably not. तो फिर उन्होंने तो अधिकारी ने कहा समय नष्ट मत कीजिए, लेकिन भक्त ने हाथ जोड़ के कहा आप ऐसे व्यक्ति का पता बता दीजिए जिससे फाइनली बात करने से काम हो जाए. तो बोले ठीक है 3 दरवाजे और छोड़ के जाओ, फिर वहाँ से राइट लो और वहाँ पे एक अधिकारी होंगे, हो सकता है लेकिन शायद परमिशन नहीं मिलेगी आपको. So when he gets to this guy's office, this guy has a really big desk. He looks very important. जब उसके पास गए तो बड़ी मेज के ऊपर वो बैठा हुआ है, उसके ऐसा लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी है. Yes, can I help you? हाँ क्या मदद कर सकता हूँ आपकी. The devotee says, I have filled out this permit. We want to have a parade down Fifth Avenue. तो भक्त ने कहा कि हाँ ये पेपर सबमिट करने आया हूँ, हमको फिफ्थ एवेन्यू पे ये जुलूस निकालना है. Now this guy had seen the devotees on the street. अब ये जो व्यक्ति बैठा था कुर्सी पे, इनने भक्तों को देखा था कीर्तन करते हुए सड़कों पे. Now you're all hearing this, right? This guy, now keep this in your mind, this guy had seen the devotees chanting Hare Krishna on the street. तो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? Okay? तो ध्यान से मुझे बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने भक्तों को हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए सड़कों पे. Okay? Take out your little mental highlighter and highlight that line. मेंटल हाइलाइटर निकाल के इस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए. You got that? Don't forget that. This guy had seen the devotees. I don't have to keep saying it, do I? You guys got it, right? Okay, you got it. All right. I'm just making sure I got it too. Okay. So this guy looks at the paper and goes, oh, you guys are the Hare Krishnas. तो इस व्यक्ति ने ऐसे पेपर देखे, बोले ओह आप लोग हरे कृष्णा वाले हैं. Oh, you know what? I see you guys chanting all the time out on the street. I kind of like it. पता है मैं आप लोगों को देखता हूँ सड़कों पे आप कीर्तन करते हैं और पसंद आता है मुझे आप लोगों को कीर्तन करते हुए देखना. And one time they gave me one of these little sweet ball things. और एक बार भगवान ने मुझे मीठी गोली भी दी थी. मतलब My God, was that good? क्या गोली मतलब क्या मिठाई थी वो. But, Fifth Avenue, oh, what a shame, because there's a bylaw that says you can't do this. फिर उस अधिकारी ने कहा ओह फिफ्थ एवेन्यू, और आप तो जानते हैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ मैं, वहाँ पे तो कानून बना हुआ है उसके विरुद्ध. But you know, I really like you guys. लेकिन देखो बताऊँ आप लोगों को पसंद करता हूँ मैं बहुत. So tell me more about the parade. और कुछ बताइए जुलूस में क्या क्या करने वाले हैं आप. The devotee says, well, in India, we do this parade and millions of people come.
भक्त ने कहा ओ हम जब भारत में ऐसी यात्रा निकालते हैं तो लाखों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं. And you see what we do. We basically just chant Hare Krishna, we distribute these wonderful foods, and everybody is happy and smiling. और आपने तो देखा ही हम क्या करते हैं. हम हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य प्रदर्शन करते हैं और सब लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं. Well, then the guy starts to explain why they can't do it. और फिर वो व्यक्ति समझाने लगा, अधिकारी, कि हम ऐसा अनुमति क्यों नहीं दे सकते. They had a big parade on St. Patrick's Day, which is the day all the Irish people in America drink a lot of alcohol and do stupid stuff. एक और दिन था जब हमने अनुमति दी थी परेड की, और उस दिन क्या है, जो आयरिश पीपल होते हैं एकदम पी के गलत गलत काम करते हैं. Not only the Irish people, anybody that wants to just drink can enjoy this parade. आयरिश पीपल की बात नहीं, जो भी शराब पी के आनंद लेना चाहता है वो सब इस जुलूस में आ सकते थे. And because of all the alcohol that's consumed, of course it gets a little out of hand. People start pushing each other. Hey, get out of my way! क्योंकि बहुत शराब पी लेते हैं वो, और फिर उनको और शराब चाहिए और चढ़ भी जाती है, तो वो धक्का देने लगता है, अरे हाँ डरे ऐसे इस तरह से. And the devotee says, but we're not like that. We don't drink alcohol. We don't do drugs. And the only high that we get is simply from chanting God's names. जी वो तो भक्तों ने समझा कि देखिए हम लोग शराब वगैरह नहीं पीते हैं, ड्रग्स नहीं लेते हैं, हमको जो भी हम जिस तरह ऊंचा जाते हैं या नशा जो हम पे चढ़ता है वो हरिनाम से ही चढ़ता है. I can promise you there won't be any broken storefront windows. There'll be no fights. It'll just be people going, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो भक्त ने कहा कि कोई खिड़की नहीं टूटेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, बस हरे कृष्णा कहते हुए हम कीर्तन करेंगे. And the guy says, wow, now that would be something. Now, what do you mean by parade? And the devotee says, we have these really big, amazing carts that we just chant next to, and we just go down the street. And then we distribute this food called prasadam to everybody. तो अधिकारी ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परेड में आप करेंगे क्या. तो भक्त ने कहा कि हम एक रथ पे भगवान को बिठाएंगे, रथ आगे बढ़ेगा, कीर्तन होगा और साथ में सबको प्रसाद बांटेंगे. Then the guy says, but there's a bylaw. लेकिन अधिकारी से बोला लेकिन नियम तो नियम ही है ना. Then the guy says, but heck, I'm the guy who makes the law. लेकिन मैं ही वो आदमी हूँ जो नियम बनाता हूँ. You know what? I'm going to approve this. And he signs it. बताया मैं इसको approve करता हूँ. मैं साइन कर दिया. So the devotee quickly takes the paper because he's trembling at this point. He's like, I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. तो भक्त ने पेपर पकड़े और वो कांपते कांपते अरे हो गया करते हुए. He thought, mission impossible. Zero chance that they're going to actually get the permit. And he's walking out the door with a sign by the head guy. तो हेड गाय से साइन करा किया है, जो लग रहा था मिशन इम्पॉसिबल है, वो नहीं वाला है. सबसे बड़े अधिकारी से वो साइन हो गया. Now he's so excited. अब वो बहुत भक्त में एकदम उत्तेजित हो गए. He fulfilled the order of the spiritual master. He did the impossible. अपने गुरुदेव का आदेश को पूरा कर दिया, जो कि असंभव को संभव कर दिया. Who could have possibly known that he would get permission? कौन ये सोच सकता था कि उनको अनुमति मिल जाएगी. As soon as he gets back to the temple, he rushes to see Srila Prabhupada. जैसे ही मंदिर पहुंचे श्रील प्रभुपाद की तरफ जाते हैं. Maybe Srila Prabhupada had heard that there was a bylaw, and that I'm going to now present the paper that got the permission to do this, and he's going to be so happy. भक्त सोच रहे हैं कि हो सकता है श्री प्रभु को पता होगा कि इसके विरुद्ध कोई कानून है, और जब मैं ये पेपर लेके जाऊंगा कि मैं परमिशन लेके आया हूँ, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे. He rushes in and says, Srila Prabhupada, I've got the signed permit for the Rathyatra. अंदर जाते हैं, प्रभुपाद रथ यात्रा के लिए परमिशन लेके आया हूँ.
Prabhupada goes, yes. तो बोला हाँ ठीक है. And the devotee was like, that's it? बस होगा. Prabhupada didn't even look at it. वाले देखा भी नहीं उसको. Yes. हाँ ठीक है. Like, you were expecting not to get it? You were expecting not to get it? Yeah. तो बात ही बोले कि हमको क्या लग रहा था परमिशन नहीं मिलेगी तो मिलनी थी. So now, Lord Jivanath is everywhere. अब भगवान जगन्नाथ सब जगह हैं. Like I was saying the other day, because I do Harinam with a couple of these fine young devotees here. तो जैसे कि मैं हरिनाम संकीर्तन आयोजित करता हूँ यहाँ पे जो युवा भक्त हैं उनके साथ. And we will chant today, but tomorrow, I believe tomorrow night, we have stage program where these two young fellows, they play electric instruments, and the old guy sings. तो आज तो हम रथ यात्रा में कीर्तन करेंगे लेकिन कल स्टेज परफॉर्मेंस होगा जिसमें भक्त लोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और प्रभु जी गाएंगे. Hari Bol. So everybody's coming, I hope, to the stage program where we anyway, you get the idea. What was I talking about? Oh yeah. So today we're actually getting this opportunity, and everywhere around India, people are going to have this opportunity. तो आज हमें ये अवसर मिल रहा है और पूरे भारत में सभी जगह भक्तों को लोगों को ये अवसर मिल रहा है रथ यात्रा मनाने का. And you probably can't name anywhere in the world where there is not a Rathyatra going on. तो विश्व में आप ऐसी किसी जगह का नाम बता ही नहीं सकते जहाँ रथ यात्रा आयोजित न हो रही. Countries in the middle of nowhere, surrounded by nothing. Siberia, Mongolia, places like, really? We even have devotees there? Yes! There are devotees of Lord Jivanath, and yes, there is a Rathyatra. ऐसे ऐसे देश जहाँ पे कुछ नहीं है, मंगोलिया, साइबेरिया, ऐसी जगहों पे जगन्नाथ के भक्त हैं और हाँ वहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा भी हो रही है. Hari Bol. Our group, that's where I was heading with that. Our group were invited this year to 25 Rathyatras. जब हमारा ग्रुप प्रभु जी बता रहे हैं ग्रुप को इस साल 25 रथ यात्राओं में आमंत्रित किया गया था. In Mayapur, there aren't any devotees with white skin left today. They're all doing a Rathyatra somewhere. मायापुर में आज ऐसे कोई भक्त नहीं, मतलब विदेशी भक्त आज नहीं उपलब्ध क्योंकि सभी विदेशी भक्त कहीं न कहीं रथ यात्राओं में भाग लेने गए हैं. And like I was saying last night, if you were here, probably most of you weren't, we were committed to go to another place for Rathyatra. जैसे मैं कल बता रहा था, हम रथ यात्रा के लिए कहीं और जाने के लिए हमने उनको कह दिया था कि हम और आएंगे. And I got a phone call from somebody who said, "Hello, I'm Bhakti Prem Swami." तो मुझे एक फोन कॉल आया कहीं से और वो मुझे बोले, "हेलो, मैं भक्ति प्रेम स्वामी बोल रहा हूँ." Now, never having spoken to Bhakti Prem Swami on the phone, all I heard was, Swami. तो मैंने कभी भक्ति प्रेम स्वामी से फोन पे बात नहीं की, बस मैं यही सुन पाया, स्वामी. And he's not on my list, my contact list, so I go, okay, who is this? कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर सेव नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? It's Bhakti Prem Swami. मैं भक्ति प्रेम स्वामी बोल रहा हूँ. Now I recognized his voice. अब उनकी आवाज को मैं पहचान पाया. And he says, I really would like if you could come to Rathyatra in Ujjain. और उन्होंने कहा हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि हम आप रथ यात्रा के लिए उज्जैन आइए. I said, I'm so sorry, Maharaj, but I've already committed our group to another Rathyatra. मैंने कहा महाराज मैं चाहूँगा लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे ग्रुप ऑलरेडी कहीं जाने के लिए हम अनुमति दे दी है उनको. But Krishna said to me in my heart,
लेकिन कृष्ण ने हृदय में मुझसे कहा, a sannyasi just asked you to go to Ujjain. You always wanted to go there. Cancel the other one and go to the Ujjain Rathyatra. लेकिन कृष्ण ने हृदय में मुझसे कहा, एक सन्यासी आपको उज्जैन बुला रहे हैं, आप उज्जैन हमेशा जाना चाहते हैं, तो ये रथ यात्रा कैंसिल कीजिए और उज्जैन रथ यात्रा में जाइए। So now we will all Get the blessings together. We will all get get the mercy of Jivanath. तो हम सबको जगन्नाथ की कृपा, जगन्नाथ का आशीर्वाद आज प्राप्त होगा। But today that mercy isn't just about us. लेकिन आज की जो कृपा है वो केवल हम लोगों तक सीमित नहीं है। Today that mercy of Jivanath is for devotees and pilgrims and visitors from provinces all around Ujjain. आज की जगन्नाथ की जो कृपा है वो भक्तों के लिए है, दर्शनार्थियों के लिए है, जितने भी जो लोग हैं उज्जैन के आसपास वो सभी के लिए वो कृपा है। So it is actually the privilege and the duty of every single one of you here today to chant and dance like this is the last Rathyatra you will ever attend. तो आज आप सभी के लिए वो अवसर है, साथ ही कर्तव्य भी है कि इस तरह से हर एक भक्त का इस तरह से कीर्तन करे, इस तरह नृत्य करे। ये आखिरी रथ यात्रा है जो आप अटेंड करने जा रहे हैं। Because think about it, there will be people who have never actually experienced the bliss of chanting Hare Krishna. They will be there seeing us today. सोचिए, ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे लोग वहाँ आएंगे जिन्होंने कभी हरे कृष्ण कीर्तन का आनंद मिला ही नहीं, वो आज आप सभी को देखेंगे। And we say, chant and be happy. और हम क्या बोलते हैं? जप कीजिए, खुश रहिए, chant and be happy। So if this is what we are showing them, तो ये हम उनको दिखाना है। Hare Krishna, Hare Krishna. If that is what they are seeing of these Hare Krishnas, chant Hare Krishna and be happy. अभी यदि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, That works. यदि हम ऐसे बुझे हुए हरे कृष्ण इस तरह जप करेंगे तो ये हम उनको दिखाएंगे कि जब करके खुश रह सा रहे हैं। What if they see Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसके बजाय यदि प्रभु ने जो भी बताया इस तरह वो देखेंगे हमको नाचते गाते हुए। Do you see the difference? आपको अंतर समझ में आया? Okay, let's do this one together. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, that's so ecstatic. I just love chanting Hare Krishna. So glad I'm a devotee. ऐसा करेंगे कितना अच्छा हरे कृष्णा, मैं भक्त हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। So we want to express our gratitude to Srila Prabhupada, to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Somehow or other, we are in this movement. Somehow or other. What's our bio say? What's it called? Our resume. What does our resume say? What qualifications did we have before joining? Probably none. Probably more disqualifications. But somehow or other, Lord Chaitanya, has accepted us into this movement of wonderful, like-minded people. So we have to say thank you. तो ये एक अवसर है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने का। हम जो भक्त यहाँ बैठे हैं इस आंदोलन को ग्रहण, इस आंदोलन में आने से पहले किसी की तरह हम यहाँ आ गए, लेकिन हमारे अंदर अगर हम रिज्यूम देखें हमारी क्या योग्यता है यहाँ रहने की या आने की, कोई भी नहीं है। हो सकता है अयोग्यताएं हमारे अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने हमें ग्रहण किया है, तो हमें ये अवसर है कि हम लोगों तक इस हरिनाम माध्यम से कृपा को पहुंचा सकते हैं। So today it's all about getting the blessings of the Vaishnav. तो आज का जो दिन है वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी है।
getting the blessings of the spiritual master, आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करने का दिन है, and getting the blessings of the Lord of the universe, और जगत के नाथ जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने का दिन है, and share it to everyone. और सबके साथ उसको बांटने का दिन है। Because we don't just want the parade to be just us. क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बस जुलूस में हम ही हैं। We want the parade to be the whole world chanting Hare Krishna. पूरी दुनिया का हम चाहते हैं वो रथ यात्रा में आए, हरे कृष्ण कीर्तन करें। And Lord Chaitanya, Lord Jivanath, and Srila Prabhupada can make that happen. And we will get the credit. और भगवान चैतन्य, भगवान जगन्नाथ, श्रील प्रभुपाद ऐसा करने में समर्थ हैं और उसका क्रेडिट हमें मिलेगा। Hare Krishna! I think we can do better than that. इससे अच्छा कर सकते हैं हम। This is like, you know, when you go on stage. Before you go on stage, you're backstage, you're loosening up. It's a big day today. I've got to nail this thing. So let's have a little bit of a warm up. Let's do a little bit of volume. Let's really let it out. Hare Krishna! Now we're showing who we really are. Because we are the Hare Krishna! And we love chanting. Didn't you all say a 10? Yes? Do you still love chanting? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अभी जो पहली बार हरे कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। बैक स्टेज होता है ना, थोड़ा पुशअप वगैरह, थोड़ा तैयारी। लेकिन जब स्टेज पे हम जाएंगे एकदम जोर से हरे कृष्णा। Now, is there anybody who's napping, who had a really good sleep and you just woke up? ऐसा कोई है बहुत अच्छी नींद सो रहे थे अभी जागे हैं? I don't think you're sleeping. I think you better check your pulse. अभी भी कोई सो रहा है तो मैं सो नहीं रहा है, मुझे थोड़ी नाड़ी चेक करनी पड़ेगी। Okay. All right. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Srila Prabhupada ki! Jagannath Rathyatra ki! Chanting as loud and dancing as much as we possibly can ki! That's it. So that was just a warm up. तो जितना हम नाच सकते हैं, जितना जोर से हम गा सकते हैं, उसकी जय। प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी ने बोला कि ये अब अभी वार्म अप था हमारा, हमने वार्म अप थोड़ा कर लिया। Okay. Anybody want to ask a question or make a comment? Like what could you possibly ask after that, right? I don't know. कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी है? हमें बड़ा पूछना चाहते हैं। Who? Toshan Krishna Das. Do you know Toshan Krishna? Yeah. He's in Hawaii now, but yeah, he's a very early disciple of Srila Prabhupada. And did a lot of service. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया क्लास थी और बहुत ही आनंद आया क्लास सुनने में। मेरा एक प्रश्न था कि जो परमिशन मिली थी रथ यात्रा के लिए और न्यूयॉर्क में, तो बाद में क्या वही कानून लागू हो गया हमेशा के लिए, या वो एक ही साल के लिए परमिशन मिली थी? He is asking that the permission which we got for Fifth Avenue parade, so that law, as the person changed the law, Yes. that law is still the same, or No, they actually changed the law for the devotees. The devotees get to have a parade down Fifth Avenue. And they've been doing it since 1976 every year. They just had it a couple weeks, maybe a week ago. नहीं हो? Rathyatra. तो प्रश्न ये था कि ये जो कानून चेंज हुआ न्यूयॉर्क फिफ्थ एवेन्यू को परेड करने का, उसी साल के लिए था कि आगे भी कंटिन्यू है? तो प्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने कानून सिर्फ भक्तों के लिए बदला है। भक्त लोग हर साल रथ यात्रा उसी सड़क से ही निकालते हैं। Yeah, they actually changed the law because it went so well. And it was funny because during this parade, and
The New York police, well, they have a word for the police in America. And it's not a nice word, but they call them pigs. Because they're like, they're always Yelling at the devotees and harassing the devotees. during this particular Rathyatra, because of the presence of Jivanath and the presence of Srila Prabhupada, these policemen were chanting Hare Krishna. तो ये कानून क्यों बदला गया? क्योंकि इतना अच्छा अनुभव हुआ रथ यात्रा के समय कि श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद से जो पुलिसमैन थे, जो अदरवाइज भक्तों को चिल्लाते ही रहते थे, वो भी हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे. They brought Srila Prabhupada to this Rathyatra in a car with a couple of his senior devotees. हम श्रील प्रभुपाद को रथ यात्रा के लिए कार में लेकर आए कुछ वरिष्ठ भक्तों के साथ. He met the Rath at a certain point, and when he got out of the car, the policemen doing crowd control that they weren't asked to do were like this. And when Prabhupada walked through, they pranamed him. श्रील प्रभुपाद जब रथ से एक जगह मिले, प्रभुपाद जी उतरे और पुलिसमैन जो ऐसा ऐसा चिल्ला चोट लगे रहते थे, सबने श्रील प्रभुपाद को प्रणाम किया. I actually saw that in 2 other airports where the policemen hated our guts for distributing books. They hated us. But when Prabhupada came through, they were like different people. मैंने 2 बार और ऐसा अनुभव किया. मुझे बता रहे हैं कि जो पुलिसमैन एयरपोर्ट पे जो हमसे नफरत करते थे, ये किताब बांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते थे और चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब प्रभुपाद वहाँ आते हैं तो उनका व्यवहार एकदम बदल जाता है. प्रभुपाद के प्रति प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं. Okay? We can have. Huh? That's it? That's it? Can I just chant for a couple more minutes? Is that okay? Okay. It'll be warm up. Huh? Warm up. Because when Prabhupada used to give a talk, he'd always have Kirtan, a talk, and then he'd finish with Kirtan. Okay, so let's do that. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me. जगन्नाथ स्वामी आप तो हमारे हो ना. पथगामी नयन पथगामी भवतु मे. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे. Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha Swami, Jaya Jagannatha. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ. Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha Swami, Jaya Jagannatha. Got it? Got it? No? I want to hear. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha Swami, Jaya Jagannatha. जय जगन्नाथ Jai Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jaya Jagannath. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ Jai Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhaja. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुभद्रा. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva,
Baladeva Jaya Subhadra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आते जाएंगे सुनते जाएंगे आपको उसको मिलेंगे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaganath, Jaya Jaganath, Jaya Jaganath, Swami Jaya Jaganath. Jaya Jaganath, Swami Jaya Jaganath. Jaya Jaganath, Jaya Jaganath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tume. Nayana Patagami, Baba Tume. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tume. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Haribol 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 Srila Prabhupada ki jai.